ठीक है, तो हम आज इंग्लिश का टेस्ट देने वाले हैं और देखने वाले एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे। और इसमें कोई टाइमर नहीं है, जितना टाइम लगेगा देखेंगे, हम एनालिसिस करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी इसमें एनालिसिस में हम जाते हैं तो देखेंगे कि आरसी वगैरह जो है वो लास्ट में ही करना चाहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए मैंने प्री लेवल के, उसमें ये तो पता चला है कि आरसी का कुछ कह नहीं सकते, कभी आंसर मिल ही जाएंगे या नहीं भी मिलेंगे। तो एंड ये जो भी अरेंजमेंट रहती है ये भी कभी कभी फंस सकती है, तो पहले ही अटेम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, क्लोज टेस्ट हो गई या फिर एरर डिटेक्शन, वो सब करेंगे फिर। दिस year's super hot summer should be a next context देखते हैं। Even if we have not learned from earlier events of extreme temperatures, erratic rainfall, negative, this year's super hot summer should be a warning। ठीक है, socialism is a political dash that continues to cause much ideological political। ये वीडियो बाकी किसी को भी इंग्लिश सीखना रहेगा उनके लिए भी है, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस वीडियो because I have trained myself from being a, I mean, a regional language student to English. Means I didn't get any basic training in English in my early education dates, like from the childhood. So yes, if you are that student weak in English, you can I mean you can trust my ways of teaching and anything further in this direction. Okay, socialism is a political dash used to cause। पूरा सेंटेंस पढ़ना समझदारी रहती है इस सिचुएशन में। सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल that continues to cause much ideological and political confusion. What device that continues to cause much ideological and political confusion? डिवाइस ही आ सकते, बाकी इतने अच्छे से फिट नहीं। कई बार होता है कि कोई कोई ये क्वेश्चंस फिट हो जाते हैं, मतलब ऑप्शंस। कभी कभी कन्फ्यूज कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे ऑप्शन में, तो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइस। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड था तो लेगेसी ही आना चाहिए था, ये अच्छे से पढ़ा नहीं। ये कई बार ऐसी गलती हो जाती। सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट कंटिन्यूज मच आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कन्फ्यूजन इन इंडिया। ये न्यूट्रल था, मतलब थोड़ा मुश्किल ही था एक्सप्लेनेशन देखते। Therefore, the must have given sentence talking about how socialism shaped the principal economic and social policies of Indian government in the past and its political legacy means the relating association with the or carried out over from an earlier time technology or business legacy का meaning। Enforcement agencies must be allowed to use scientific method to and detect crime methods to क्राइम को क्या कर सकते, प्रिवेंट, पेंट और मतलब डिस्ट्रैक्ट करना। परवेंट का मीनिंग प्रिवेंट का पता है, रिपेंट मतलब अपनी गलती सुधारना, इन्वेंट मतलब इन्वेंट क्राइम, साइंटिफिक इन्वेंट। प्रिवेंटिव फिट हो रहा है यहाँ पर, देखते हैं प्रिवेंट।
फिर उसके बाद ये थोड़े इजी रहते हैं, एरर डिटेक्शन से पहले ये कर सकते हैं। आफ्टर आवर ट्रूप्स लेफ्ट द वॉर टॉर्न कंट्री, immigration occurred, citizens to their unstable form of government. After our troops left the war-torn country, regression occurred and the citizen resorted to their unstable form of government. PCA भी हो सकता है, is war country war torn. Regression occurred when the citizen resorted मतलब वहां पे गए अनस्टेबल गवर्नमेंट के पास, तो से हो सकता है। सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको किसी। फॉलोइंग द attendance the fintech fund, following the pandemic, fintech fund require increase office attendance AC from 1 day per week initially to gradually increased office now requiring employees to be present। सिर्फ सी ऑप्शन है क्या, सी एंड डी, requiring employees to present physical office for 4 days each week। सबसे पहले स्पीड स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देना है सर, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो आराम से, ये तो गलती हो सकती है। छोटे छोटे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आइडिया लग जाती है पैराग्राफ कैसा रहेगा। जो द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम प्रोजेक्ट in stillness of a little hours there was scientific hard work. His grand project consisted, grand project, a positive word, venture consisted of machine with potential to navigate through time. His excellent serenity and activities required substantial amount of electrical power, which often led to interruption. He spent on town to feel seen. Now, फ्रेट नहीं, इन्फ्लुएंस भी नहीं, एफर्ट्स, ये सब कॉन्टेक्स्ट मतलब अलग ही मीनिंग है ये सब। इसका एफर्ट्स और वेंचर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको पैराग्राफ देखना पड़ेगा कि पैराग्राफ में क्या मीनिंग है। The otherwise quiet townsfolk found themselves caught up in their understand साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है, उसकी अर्ली इनोवेशन की, हिज ग्रैंड प्रोजेक्ट, मतलब ग्रैंड प्रोजेक्ट है तो वेंचर या ऑपरेशन, इसमें चांस लेना पड़ेगा। हिज ग्रैंड वेंचर कंसिस्ट ऑफ मशीन पोटेंशियल 100, ये उसका विजन है, तो ऑपरेशन थोड़ा फीका सा लगता है, वेंचर देख करके देखते हैं। ठीक है, देख सिर्फ 27% करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में ये था कंफ्यूजन। उसको क्लियर कैसे किया कि वेंचर मोड ऐसा मतलब कुछ तो बड़ा काम करने का ये सोच रहा है, ऑपरेशन मतलब स्पेसिफिक पिन पॉइंट हो रहा है, ऑपरेशन मतलब सीरियस चीज़ों के बारे में, मतलब क्राइम ऑपरेशन, ये वो तड़ ज़्यादा जा रहा है। इसका दूसरा मीनिंग भी देख लेते हैं, संचर फैक्ट इज फंक्शनिंग बीइंग एक्टिव,
efforts मतलब प्रयास, project, a planned piece of work. When a risky or daring journey of under scientist है तो risky और daring करना है तो venture market. How did the young boy perceive the scientist nightly activities? Their very young boy didn't in the town person boy was different. He saw nightly activities not as disturbance but as an opportunity presented by science that could redefine future. He was fascinated by scientist work uh, as an opportunity. लिखा है as an opportunity. He was fascinated by scientist work, the strange sounds and light that bothered the rest of the town lit a spark of curiosity in him. A threat community's peace. अपॉर्चुनिटी बस इतना ही बोला है तो इतना ही मार्क करेंगे एज एन अपॉर्चुनिटी. ये नहीं करना था पहले. वो नंबर एंटोनिम करने आए थे. ये थोड़ा पैसेज थोड़ा इजी और स्टोरी टाइप लगा तो कर लिया था उतना टाइम. synonym of word reservation. Dedicated, bond mutual respect and shared interest grew between them despite the town's growing reservation and push back against the scientist. Growing reservation, suspicion, hesitation, misgiving. Hesitation आ सकता है. Reserve. Absolute. The boy remained steady, absolutely sure of importance of the work, where doing support and offer a beacon of hope who was unwavering. 67% answer correctly. He admired the scientist's dedication to his project and found out with the scientist grew between despite the town's growing reception against the scientist and the boy remained यहाँ पे इसका मीनिंग सस्पिशन में जा रहा है. हेजिटेट तो नहीं किया है टाउन्स. ग्रो क्या करते सस्पिशन या ग्रो होता है. और ये रिलेक्टेंस का कंटेक्स्ट में फिट नहीं हो रहा. अनसर्टेनिटी मतलब जो लड़का है वो अनसर्टेनिटी में बिलीव कर सकता मतलब ये मेरे से होगा कि नहीं होगा ऐसे. मिसगिविंग भी नहीं होगा तो ये दो नहीं बचे. सस्पिशन एंड हेजिटेशन. ग्रोइंग visual importance of work by doing it support of become of एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लगेगा ही. फास्ट मार्क करना होता तो मैं ये सस्पिशन पे मार्क करके चल रहा था. क्या मिसगिविंग. मिसगिविंग का मतलब है a feeling of doubt or appreciation about outcome or consequence. ये सस्पेंशन से ज़्यादा मिसगिविंग फिट हो रहा है. सस्पेंशन मतलब सिर्फ डाउट और मिसगिविंग का मतलब a feeling of doubt or apprehension about outcome of something. वही सस्पेंशन मतलब उनको सिर्फ संदेह था और इसको है कि आउटकम और कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है इसके बारे में भी बात हुई है. ये देखो अगर हिंदी में देखने जाएंगे तो सस्पेंशन का मीनिंग भी संदेह इसकी उनका मीनिंग भी संदेह. डाउट और एप्रिहेंशन दैट टाउन्सफोल्क हेल्ड रिगार्डिंग नाइटली एक्सपेरिमेंट. वही ये थोड़ा कम इफेक्टिव था क्योंकि थोड़ा आधा ही मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा था. ये मिसगिविंग पूरा मीनिंग एक्सप्लेन.
इसी से सीखने मिलता है हमें, क्योंकि इसको मैं प्रिपेयर करके लाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है उसको प्रिपरेशन का। ये सब पैराग्राफ तो हमेशा लास्ट में ही किया करो, ये अरेंजमेंट वाला, क्योंकि उसका कुछ भरोसा, कभी आया इजी आए तो हम 1-2 मिनट में भी कर लें, पर वो 5-6 मिनट भी खा जाए। by cancelling all visas that had been issued earlier to Afghan cities, including government bodies, which misspelled word ye, and terrorists. Despite completion, delimitation, announced this year, despite this year, completion, completion, spelling or delimitation, spelling. COMPLI, completion होता है, completion होता है, delimitation। अरे बाप रे, स्पेलिंग में तो कंफ्यूजन होता है, किसमें चांस लेना पड़ेगा 50-50 में। कंप्लीशन ऐसे स्पेलिंग का, डी सी, डिलिमिटेशन। देयर इज नो सच वर्ड एज डिलिमिटेशन, डी ई, डी ई होगा, वही बोल देगा। और कंप्लीशन में कंप्लीशन ई ही होता है। Okay. The problem of illegal mining of mineral, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। The likelihood that benefit long incarceration, इनोकंट इनोसेंट होता है। ये कंफ्यूजन के लिए ये भी दिया है क्वेश्चन, ई मार्क करेंगे। With the depreciating currency prospect sustaining investment, recovery is within the result was the best who would be expected. The result was the best who could have been expected. See, was the best. The relative pronoun who is used for saying exactly which person or whom could have been expected. Instead of who or which, the relative pronoun that is used for adjective relative pronoun. People prefer mobile in than storybooks. People prefer mobile games rather than storybooks. C mark. The verb prefer means like or want something more than, instead, prefer के पीछे rather than और ऐसा कुछ लगाना चाहिए था। कंपेयर किया है ना तो यूनिट भी लगाना चाहिए यहाँ पे। वन ऑफ
One of the aim of ethnography is to contribute to understand one of the aim one of the एम्स होना चाहिए यहाँ पे वन ऑफ द बोला है ना वन ऑफ द बोला मतलब बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से एक एम है contribute to an understanding of human rights बी बी टेक्निकल वर्ड्स में देखना है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन सिंगुलर टर्म वन ऑफ द मतलब कॉमन सेंस से अगर सोचेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है तो एम्स भी बहुत सारे होंगे बहुत सारे एम्स में से एक वन ऑफ द एम्स ऑफ एथेनोग्राफी कोई ऐसे रटने से याद होता है तो रट भी सकते हो तो नाम pronoun is one of is always in plural after planting the time bomb the terrorist quickly left the building quickly left the building bag and baggage ये पता नहीं ये बैग एंड बैगेज क्या बोलते हैं उसको फ्रेज है या क्या है after planting the bomb the terrorist quickly left the building bag and baggage left the building with bag and baggage विदाउट बैग एंड बैगेज इससे कुछ गाना चाहिए नो एरर भी हो सकता है तो प्लेंटिंग हाँ तो टेररिस्ट क्विकली लेफ्ट द लेफ्ट द बिल्डिंग बाय डिप्लॉइंग ऐसे कुछ कनेक्ट तो करना चाहिए फ्रेज होगा तो गलत हो जाएगा तो यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते तो बिना मार्क किया आ सकते लेना ही है रिस्क तो डी मार्क नो एरर बैग एंड बैगेज क्या है ये फ्रेज होगा of the ones belonging especially with reference to departing with them completely or totally. The day he quit his job, John walked out bag and baggage. ऐसा एक क्वेश्चन तो देते ही एग्जाम में नो एरर वाला यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को पता है तो साउंड ये होना चाहिए नाक से निकालना चाहिए यूनिवर्सिटी अवार्ड academic degrees in various academic disciplines यूनिवर्सिटी होता है तो हम ए मार्क करेंगे यूनिवर्सिटी एनी वॉवेल विद कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जो वही जो मैंने एक्सप्लेन किया आवाज़ ऐसे नाक से निकलेगा तभी उसको एंड निकल लगाना चाहिए तो बचपन से आपने पढ़ाई होगा यूनिवर्सिटी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा ये एरर डिटेक्शन के टाइम पर जैसे छोटे छोटे भी एरर हो सकते हैं एंड आर्टिकल this year's our salary increment doesn't match the rate of inflation मैच नहीं हो रहा है सैलरी इंक्रीमेंट ही मैच नहीं होगा एडिमेंट मतलब स्टैग्नेशन एबेस्ट का मीनिंग मॉडिफाई मतलब मरने का रेट या कुछ कम होना ऐसे ही होगा इंडिजिबल ये भी नेगेटिव सेंस में लग रहा है ठीक है सैलरी the peace negotiations has been for last 25 years and hope is that this would
culminate in a lasting settlement has been in progress for the last. Hope is that at lasting settlement, peace negotiation. डिस्ट्रेस में है इसलिए तो 25 ईयर से चल रहे हैं वो प्रोग्रेस इस प्रोग्रेस peace negotiation has been in advancement or progression for last 24. Therefore, the most appropriate word framing is the use of word negotiation with sentence positive. Use word of progress in the blank. Means development towards improved or more advanced condition. Negotiation से तो पॉजिटिव में जाना चाहिए स्ट्रेस एक्सट्रीम एंजाइटी सॉरो पेन के सेटल है पर इन लास्टिंग सेटलमेंट बोला है ना नेगेटिव आरसी बचा है अब which of the following true according to the passage this experiment on the serenity पढ़ लिया था the otherwise scout transport found themselves caught in their nightly disturbance, disturbing sound, flickering light disturbance, sleep power station is when since coming to count and not stress the growing reservation of the night significant that scientifically a tough decision that necessary later however the to present to present Nobody was the rest of the archaeology about some to stone the backdrop of discontent. Despite the time, support favoring is a political ambitious project. Okay, the towns were requested the scientists to leave the town. Disruptive activities. Scientists were was out in town very beginning. The power supply of town improved due to scientist experiment. Scientist he had made a scientist project and found which shared and placed grew between this but the town absolutely sure importance of offered beacon of disrupted sleep and occasional power cut. This growing more than made them to significant nature for period. Scientists gave a lot of decision but what is the young boy found the scientist late night activity disrupting activities of later they were sent experiment system the night and sleep very suddenly such activities in perception interruption towns power supply the neighbors began to watch their football dance for the power supply of the town improved distance were the young found some distance to transport requesters and digital yet
यहाँ पे कहीं पे उसने लीव करने के लिए बोला, where what where the act of scientists work on town inhabitants. What were the effects? It sparked curiosity about increasing learning, disruption and inconveniences in their daily life. ये हुआ था, यहाँ पे बोला है पावर कट, पावर सप्लाई कट होने लगा, डिस्टर्बेंस तो होगा, कनेक्ट declared an divide on our just all inconveniences in their daily life. How did the community react to the constant disruption caused by the scientist? The requested scientist to leave time. They arranged and रिक्वेस्ट किया था. हाउ डिड कम्युनिटी रिएक्ट? एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे. व्हाई डिड द बोर्ड असिस्ट द साइंटिस्ट responded on this through approval? He wanted to learn about the experiment. He was related to scientist. He was paid by he was he wanted to learn the experiments. Oh, what is false? False पूछा है. Scientist in the younger form of nature respects of interest. Transport found himself caught up in nightly disturbed caused by the scientist. The young boy was repelled by scientist activities. The spark his belief तो extended his helping hand to the scientist. Extend किया तो repel कैसे करेगा? ये हो गया. बहुत इजी था. सीधा. ये था हमारा इंग्लिश लर्निंग सन नंबर 2. फर्स्ट ही लेसन बोल सकते हो कि इतने डिटेल में को फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन किया है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. और सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपेयर करने वालों के लिए नहीं है, जनरली अगर किसी को इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं भी इम्प्रूव ही कर रहा हूँ आप लोगों के साथ सीख के, मतलब देख के ये सॉल्व करके. ओ ये बचा है लास्ट वाला, ये करके फिर खत्म वीडियो. इसमें क्लूज देखने हमें कौन सा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है. वी शुड extend our visit. Father, the young girl insisted, completely enchanted by the rustic charm of village. Story है. Her father, who had originally planned a brief visit, found himself trying to convince his daughter that it was a time to return. It had all started when her father mentioned that he was undertaking a trip to the village, invoking his daughter an enthusiastic wish to accompany him. He agreed, and they embarked on their village journey together, not realizing the impact would have on them. Much to her father's surprise, she fell in love with the village. First glance expressed a desire to spend more time with her. Using a gentle smile, the father promised his persistent daughter that would revisit the village, thus finally persuading her. अ, पता चल रहा है कि एफ लास्ट सेंटेंस होगा, उसके बाद ए जो है वो उसके पहले आएगा. वी शुड नॉट एक्सटेंड आवर विलेज विजिट फादर our we should extend our visit farther, the young girl insisted, completely enchanted by the rustic charm of the village. Posing a gentle smile, her father promised his persistent daughter that they would revisit the village. Okay. She fell in विलेज के साथ फेल इन लव कब होगा? जब वो डिस्कवर करेंगे पहले विलेज को. हर फादर वॉज originally planned a visit from himself trying to convince him
his daughter that it was time to return home. ये भी एक के पहले आया. ये, it had all started. Yeah, much toward she. स्टोरी का ओरिजिनेशन सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस तो बहुत कंफ्यूजिंग है. It had all started with that he was taken to Mexico starting with father original friend and his daughter Betty. He agreed and they embarked on the village. B. One village journey together, not realizing the impact it would have on little much of her father's surprise. Much of her father seems fell in love with the village at the first glance and expressed a desire to spend more time there. ये या इससे पता चल रहा है कि ई जो है सी को फर्स्ट किया उसके बाद ये बी नहीं सी डी. It had all started when her father mentioned that he was undertaking a trip where he agreed and C and then B C D E A F. जो भी किया है देखते हैं अभी सही आता है कि नहीं. Which is the first sentence. C. Okay. इतना तो सही है. अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं क्या. जाने दो. वर्ड नहीं समझे. नहीं देखे रहे सामने आ गए तो C D E उसके बाद A B F. फर्स्ट स्टार्टिंग के तो सही है. लास्ट के तो सही है. बीच का ई और ए का नहीं. C B E D E ए लास्ट में कर दिया था. तीन क्वेश्चन सही आते 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. ए. Much to her father's surprise, she fell in love with the village at first glance and expressed a desire to spend more time there. Then, then the girl said, "We should extend our visit further." फिर उसने प्रॉमिस किया. सेकंड सेंटेंस किया था नहीं. सॉरी. It had all started when her father mentioned that he was undertaking a trip. Here he agreed to embark on their village journey together, not realizing the impact it would have on little girl.
फिर मच टू हर फादर सरप्राइज एंड देन आता है हमारा CD। बी की तरह बी हर फादर वुड ओरिजिनली प्लान्ड। ये बहुत कंफ्यूजन वाला था। गर्ल ने इंसिस्ट किया, फिर फादर ने सोचा। इसे देखने जाए इन जनरल तो सही है, पर ऐसे सॉल्व करने जाते तो बहुत कंफ्यूजन होता है। थर्ड सेंटेंस CDEABF। CDEAB है। CDEO। देखो 23%। सबने वही गलती की है शायद मेरे जैसी। लास्ट तो ऐसे कंफ्यूजन होगा ना, तो जो आपको फर्स्ट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस या फिर फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट एंड सेकेंड लास्ट सेंटेंस मिल जाएगा। तो वही 4 मार्क करके आना है अगर एग्ज़ाम देना। तो एग्ज़ाम के लिए ही एग्ज़ाम में ही पूछेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछते हैं सेंटेंस। अरे पूछा तो वही करना है। 2 या 3 मार्क करके वो कंफ्यूजन रहेगा तो विच लास्ट, जैसे कि मार्क किया था F। ये था एनालिसिस। सब लोगों को पसंद आया।